Chapter number 12, correlation. We completed with Spearman, scatter diagram. राइट स्कैटर डायग्राम किया था हमने, जहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्टली नेगेटिव जैसी चीजें देखी. यस, मैरिट्स डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम. यस, नाउ अगेन आई वुड लाइक यू ऑल टू जस्ट हैव अ रिमेम्बरेंस दैट सबमिशन आपको करते जाना है, और यू आर वेटिंग फॉर एनी स्ट्रिक्ट एक्शन टू बी टेकन. दिस इज फॉर ऑल ऑफ देम जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, एंड इवन यू. राइट, सो सबमिशन के लिए प्लीज रेगुलर हो जाओ. When we are talking here about Carl Pearson's method, then it is a method which has given a quantitative method, right? जहाँ पे हम correlation मैम calculate कर सकते हैं. We already had a small introduction regarding correlation, right? Scatter diagram. Let's have a quick revision of it. See बेटा, correlation जो है, that is an association. That means it's a value between two random variables, right? It shows how to determine both the nature and the strength of relationship between two variables. Two variables के बीच में कितना correlation है, कितना उनके बीच में वेरिएबल्स के बीच में किस तरह की कौन सी कैसी रिलेशनशिप है, दैट इज बीन एक्सप्रेस्ड इन कोरिलेशन मेथड. राइट, व्हेन द वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट तो कोरिलेशन अप्लाई किया जाता है. जब वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं उस टाइम पे कोरिलेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है. एंड डोंट फॉरगेट कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 to -1, और यू कैन से -1 to +1. ना ही +1 से ज्यादा होता है, ना ही -1 से कम होता है. राइट, रिमेंबर दिस थिंग अनफॉरगेटेबली कि कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, या फिर आप बोल सकते हो -1 to +1, +1 to -1. ओके, zero correlation indicates that there is no relationship between the variables. अगर हमारा आंसर 0 में आता है, राइट, इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में. right, and if it is perfect -1, then it leads to a perfect negative correlation. If leads to +1, it indicates a perfect positive correlation. Students, this can be a 1-marker question. If there is zero correlation, what is the relationship between the variables? Positive, negative, no, none of above. MCQs में भी आ सकता है. If correlation of -1 indicates a dash correlation, we have to write perfect negative correlation. This can be a 1-marker question, right? See beta, same way if you can go for it. Types of correlation, 3 types of correlation है, type 1, type 2, type 3. What are the types? Positive, negative, no correlation and perfect. परफेक्ट किस तरह से है? परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, राइट. ये अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा. वी सॉ दैट टाइप 1 में पॉजिटिव कोरिलेशन इफ इट लीड्स टू 0 to +1, राइट. नेगेटिव कोरिलेशन अगर वो कोरिलेशन की वैल्यू 0 से -1 की तरफ बढ़ रही है, देन इट इज नेगेटिव कोरिलेशन. अगर वो 0 से +1 की तरफ बढ़ रही है, देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. If it is zero, then there is no correlation, right? And if it is perfectly -1, perfect negative. If it is perfectly +1, it is positive, perfect positive correlation. Clear for all? yes ma'am. Okay. So Sinya will tell me positive, negative, no and perfect. What is this? मैम पॉजिटिव हो तो उसमें +1 होता है, नेगेटिव में -1 होता है, नो में 0 और परफेक्ट नेगेटिव होता है वो -1, परफेक्ट पॉजिटिव होता है +1.
तो आपने पॉजिटिव भी -1, पॉजिटिव भी +1 बोला, नेगेटिव भी -1 बोला, तो उसमें परफेक्ट में और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फर्क? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? यशवी? मैम पॉजिटिव में 0 से +1 के बीच में होगा और नेगेटिव में 0 से -1 के बीच में होगा। यस, एंड परफेक्ट में? परफेक्ट में या तो +1 या तो -1, पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए -1। एग्जैक्टली। अब समझे सिनिया? यस मैम। आलोक प्लीज रिपीट। पॉजिटिव में 0 से +1, नेगेटिव में 0 से -1, नो में 0, परफेक्ट पॉजिटिव में +1 और परफेक्ट नेगेटिव में -1। यस, राइट। सी बेटा, अगर टू रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, इफ वन इंक्रीजेज या डिक्रीजेज द अदर वन आल्सो इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। अगर ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, राइट, देन दे आर डिपेंडेंट। लेकिन इफ one variable increasing and other variable is decreasing, then the variables are independent, right? If both the variables are independent, one variable will increase, other variable will decrease, right? See beta, type 2 है, that is linear and non-linear correlation. जब उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, एक परफेक्ट लाइन क्रिएट होती है, that is linear correlation. आई बात समझ? that is linear correlation. If you draw on a graph, say for example this is a graph and you draw this straight line, this is what is linear correlation, right? This is what is linear correlation. If you draw a graph, if you draw a graph and it is not a perfect line, it can be zigzag, zigzag, right? Then it shows you that it is a non-linear correlation. Clear? Linear correlation means when the plotted on graph tends to a perfect line. And when this plots on a graph does not present a straight line, that is known as non-linear correlation. Right? See here you can see this. Correlation 1, perfect positive. Correlation -1, perfect negative. This is the same picture which I told you to draw in your notebook. Right? Textbook में मैंने आपको पूरा box tick करवाया था of drawings, diagram of this correlation. This is the same thing what you have to present in your notebook. See, this is correlation 0. Right? See, this is 0.8, मतलब 1 के आसपास. So इसीलिए ये देखो straight line के आसपास ये points. 0.2. Right? It is 0.2. That means ये 0 के आसपास. See, that's why it's a picture somewhat relatively to 0. Right? Next correlation है type 3, that is simple, multiple, partial. Right? Simple, multiple and partial correlation. When two independent and one dependent variable are there, that is simple correlation. Right? जब दो independent variables हैं और एक dependent variable है, that is simple correlation. आई बात समझ? Next, if there is one dependent and more than one independent variable, then it is multiple, right? Next is if one dependent variable and more than one independent variable, but only one independent variable is considered and other independent variables are considered constant. सिर्फ
यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बट एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वेरिएबल, राइट, एंड दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन, राइट. Yes, I would like Hardik to read these 3 points. Correlation. This is what we are going to start now. Scatter diagram method, which we already done, right? Carl Pearson's coefficient correlation of method, जो हम अब करने वाले हैं, and next is Spearman's rank correlation method. Scatter diagram, that means it is presented on diagram. This shows linear relationships, right? When it is a straight line, it shows that it is a good one, good relationship between the variables. And if it shows somewhat variables nearby to the straight line, right? देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो, this shows a strong correlation, right? It is a good fit with the data. जितने ज्यादा spreaded points होंगे, correlation उतना ही weak होगा, right? And that's why this line is called regression line, right? This line is called regression line. Regression line is y is equal to bx plus a. Fine. See, coefficient of correlation को हम r से represent करते हैं. It lies between +1 to -1. It shows magnitude and direction of the variables, right? Coefficient of correlation here always, it is a measure of the linear relationship between two variables that is defined in the terms of sample of the variables divided by their standard deviation, right? Sample of the variables divided by their standard variations. Clear? It is always r is located between -1 to +1, right? Minus and plus signs denote positive and negative linear correlations. Fine. Here you can see the formula जहाँ पे x axis y axis दोनों present किए जाते हैं. n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by, ये root है, right? This is for standard deviation. Coefficient of correlation n into bar of sigma x square minus sigma x the whole square, right? Minus n sigma y square minus sigma y the whole square, right? ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में मैं आपसे टिक करवाऊंगी. ओके, when r is 0.70 plus 0.7, मतलब that is near to 1, then it gives you that it has a strong correlation. Same way, if it is -7, it is strong negative. It is not perfect negative, it is strongly negative, right? Moderate correlation जो है, that always lies between 0.3 to 0.7, right? Weak correlation is always below 0.3. It lies between 0 to 0.3 or between 0 to -0.3, right beta? See, there is some determinations for coefficients. Mihir, can you just read it out? Yes. Coefficient of determinations lines between 0 to 1 represented by r square. The coefficient of determination is a measure of how well the regression line represents the data. If the regression line passes exactly through every point on the scatter plot, it would be able
to explain all the variation. The further lines is away from the point, the less it is able to explain. Yes, right? जो हमने आगे पिक्चर फॉर्म में देखा था, सेम वे इट इज प्रेजेंटेड इन वर्ड्स. इफ द प्लॉट्स, दैट मीन्स जो नंबर्स है, जो पॉइंट्स आप लोग प्लॉट कर रहे हो, अगर वो लाइन के आसपास हैं, देन इट शोज दैट इट इज अ गुड फिट. राइट? थोड़ा बहुत आसपास में है हमारे परफेक्शन के, लेकिन अगर वो पॉइंट्स लाइन के दूर दूर हैं, then it shows that there is not a good relationship between the two variables. Clear? Yes? Okay. Alok, please continue. R2 is useful because it gives the proportion of the variance fluctuation of one variable that is predictable from the other variable. It is a measure that allows us to determine how certain one can be in making prediction from certain model graph. The coefficient of determination is the ratio of the explained variation to the total variation. The coefficient of determination is such that 0, r square 1 and denotes the strength of the linear association between x and y. Yes, right बेटा. R square जो है हमेशा वो हमको fluctuations के बारे में बताता है. Right? It always shows about the fluctuations from one variable, right, to other variable. It always helps us to measure, it always allows us to measure and determine के मॉडल या ग्राफ देख के हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. राइट? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो हमेशा वेरिएशंस के बीच का एक रेशियो प्रेजेंट करता है, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज सच दैट आर स्क्वायर करना होता है हमको इधर. That also lies between 0 to 1. Always when it is a square, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. Because if two negatives are multiplied, it will give one positive. ठीक है? So यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है. Same number is to be multiplied twice. -2 into -2 करोगे तो +4 मिलेगा आपको. Right? That's why R square always lies between 0 to 1. Please don't forget, R square always lies between 0 to 1. Right? Sinya, please continue. The coefficient of determination represents the percent of the data that is closest to the line of best fit. For example, if R equals to 0.922, then R square equals to 0.850. Always Which means decimal के बाद आपको single numbers ही read करने होते हैं. Always after decimal 0.850. Okay? which means that 85% of the total variation in y can be explained by the linear relationship between x and y as described by the regression equation. The other 15% of the total variation in y remains unexplained. राइट? y में जो 85 जो हुआ 85 0.85, दैट मीन्स 85% जो है टोटल वेरिएशन का, उसको हम लीनियर रिलेशनशिप से एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिमेनिंग 15% इज अनएक्सप्लेन्ड. राइट? दिस इज about Karl-Pearson's, right? So this is the theory part what we did. Now tomorrow we will start with the sums, right? Yes, ma'am. Right? Less than 1 minute is left. Meeting may end at any time.